हाय सो इट्स टाइम फॉर द आस्क अवी आर्या Q&A अगेन। अब हम कार्तिका का तीसरा सवाल लेने जा रहे हैं। Third question for you is, how can traditional industries like the wedding market leverage digital marketing to evolve beyond a finite audience and tap and target into a new customer base? Hi, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? कार्तिका इज आस्किंग कि कैसे वेडिंग प्लानर्स या वेडिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया को यूज करके नए कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं एंड कैन गेट अ बिगर रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम मे बी अ डिफरेंट डेमोग्राफिक। सो कार्तिका, वेडिंग, सो आई ऑलवेज से आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपने कहा कि वेडिंग को कैसे पकड़े, तो ऑलवेज लुक एट द बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। पहले वेडिंग से पहले आपके कस्टमर क्या चीजें सोच रहे हैं? क्या वो सोच रहे हैं कि शादी करना जरूरी है, लिव इन ही कर देते हैं, या वो सोच रहे हैं कि शादी दिल्ली में करें या किसी डेस्टिनेशन वेडिंग करें, शादी में 50 लोगों को बुलाए या 100 को बुलाए, सिर्फ कोर्ट मैरिज करके शादी के जो पैसे हैं वो बचा के अपार्टमेंट ले लें। व्हाट आर द प्री क्वेश्चंस? देन यू थिंक ऑफ द ड्यूरिंग क्वेश्चन। शादी में सुबह क्या फंक्शन है, दोपहर को क्या है, रात को क्या है, लॉजिस्टिक्स कैसे चलेंगी, गाड़ियां कहाँ से चलेंगी, ट्रैफिक में क्या होगा, मामा जी को चाचा जी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, वेडिंग प्लानर को क्या देना है, व्हाट टाइम शुड आई गेट अप इन द मॉर्निंग, हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ माय स्किन ड्यूरिंग। Then after, what after are they thinking? You know, what are they thinking? Where are they going for their honeymoon? When are they going to resume their job back? When are they going to resume their business back? उसके बाद क्या वो एक अपनी फैमिली स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? All those things. Once you're able to understand the before, during and after of your customer, of any customer, then you know you can then start creating content on saying, hey, should you be in a live-in or marriage? Let's discuss the pros and cons on my next video. And then call a couple of people, create a panel discussion and ask people. See, you become the facilitator and all of those people will do Q&A, but it will be coming on your show. With that, you will be able to become the go-to person for pre-wedding questions. You know, what should I do before my wedding? Similarly, you can create a show where you will ask people during the wedding के क्वेश्चन, 8-10 पैनल डिस्कशन जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी हो चुकी है, कि what are the do's and don'ts, and you do the interview things like Ellen does the interview, Gary Vee does interviews. The interviewer not only gets knowledge but creates a lot of content for other people through other people's information, and then एक after का पैनल बना सकते हैं। इसमें से कार्तिका, you will get amazing ideas on what are the niches that people want. Maybe people want only destination wedding, or maybe people want help in court registering the court marriage. Maybe people want, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में इंडियंस रहते हैं, and they want to be able to come to India. What are the marriage, legalities over there? So you will realize that there will be different niches which will come out. Maybe a niche could be, come to India, we'll help you get married legally and be able to go back with your spouse, your paperwork, immigration, whatever is needed. And that is the part of the wedding that we take care of. Or you may say that I know you're coming to India after 20 years, you're an NRI who's been settled in America. Now when you come back, we'll help you create the right rituals, so your ritual happens according to your tradition. So what is that one niche that will come through doing these kind of interviews? So I hope that answers your question. और आप लोग जो सुन रहे हैं, इस आंसर में आपने क्या सीखा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? भूलिएगा नहीं, कंपटीशन चल रहा है, कॉन्टेस्ट हमेशा चल रहा है, कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ आंसर्स और कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आपको हर संडे मिलेंगे। और मेरे बर्थडे 29 अक्टूबर को मैं एक आईफोन दूंगा आप उस सब्सक्राइबर को जो सबसे ज्यादा हमारे साथ पूरे साल एंगेज रहा है, कमेंट करता रहा है, शेयर करता रहा है वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच कार्तिका, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। इस कमेंट को करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।